Hello class 6. In last video we had done with the stem and the functions of the stem, the modifications of the stem, and we had also studied the leaf, what is the parts of the leaf, like the vein, the lamina, this is the midrib, the veins, and this is the petiole by which it is attached to the stem. So we had all studied there. In the last video we had also studied this kind of venation. The arrangement of veins on the leaf is called venation, and this kind of venation in which it is full network, it is called reticulate venation, and a vein, and this kind of venation in which there are parallel veins, so this is called a parallel venation. We had also studied the functions of the leaf. So what is the main function? You all know leaf is green in color because it is having chlorophyll in it, and the main function of the leaf is they prepare food in the presence of sunlight with the help of water from the soil and carbon dioxide in the air. So they are also called and what does the chlorophyll do? Chlorophyll traps the sunlight and thus provides energy to the plant for making food, and this process is called photosynthesis. We all know, we had studied earlier also. Then the food that the leaf prepares is a kind of sugar called glucose, and the glucose may further change into starch before the plant stores. Like what the food prepares is glucose, and when it is storing, the extra glucose is stored in the form of, not in the form of glucose, it is stored in the form of starch. Okay, so plant, they use some of this food to perform their life functions and store the rest in fruits, roots, stem or leaves. So actually leaf is providing food to the entire living world. If leaves are not there, we will also not get the food. Okay, so now we will study this activity 6, in which we will study the various attributes or various properties of the leaves. If you collect different kind of leaves, see here there are the pictures of different kinds of leaf, and we study the different property, size, like some leaves are small and some are very big like banana leaf. Then color, some leaves are mostly green, mostly the leaves are green, but there are some leaves they have the spots of other colors also, for example in coleus. Then the shape, if you go to the shape, they have different various shapes, like some are long and thin as in grass, and some are long and needle like as in pine, and then some are circular like in water lily. If you talk about the edges, edges means uske kinare, so some leaves have smooth edges like in mango, but there are some leaves that have such as oak leaves that have jagged edges. Then arrangement on a branch, they are arranged in a separate way. All the leaves are arranged in a separate way, or there are some are leaves are arranged in a separate ways, and some they are bunched together. So that's the way they are arranged on the branch. Then if we talk about the veins, some have the parallel veins and some have the reticulate venation. Okay, so these are the different attributes, like this is the papaya leaf, mango leaf, neem leaf, pine leaf. So these properties are the different properties of a leaf. Now when we talk about experiment number 7, so we had said that leaf prepares food and stores food in it, so we should get some food in the leaf also. So to test that, we actually test for starch in the leaf. स्टार्च का एक खास टेस्ट होता है जो हम सबको पता होना चाहिए, वो ये होता है कि जब भी हम स्टार्च में आयोडीन डालते हैं, तो आयोडीन सोल्यूशन जो कि रेडिश ब्राउन होता है, इट टर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट टर्न्स टू ब्लूइश ब्लैक. तो अगर हम लीफ पर ऐसे डालेंगे स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आयोडीन, तो उसका जो सोल्यूशन है वो रेडिश ब्राउन से ब्लूइश ब्लैक हो जाना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें स्टार्च है. बट
बट लीफ में हम ऐसे आयोडीन सोल्यूशन नहीं डाल सकते, हमको पहले लीफ को ब्लीच करना पड़ता है। ब्लीच मतलब हमें उसमें से क्लोरोफिल या ग्रीन कलर निकालना होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसको वाटर में बॉईल करते हैं। फिर उसको हम, ये आप टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, इस टेस्ट ट्यूब में हम स्पिरिट रखते हैं, और ये स्पिरिट मतलब अल्कोहल, और उस अल्कोहल में हम इसको बॉईल करते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे इसके लीफ का कलर ब्लीच होने लगता है। और इस अल्कोहल को हम डायरेक्टली नहीं हीट करते हैं, क्योंकि अगर अल्कोहल को हम डायरेक्टली हीट करेंगे इट विल कैच फायर। सो वी टेक इट इन अ वाटर बाथ। इस तरह से इसको ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं वाटर बाथ, यानी कि बीकर में पहले पानी डाला और पानी के अंदर टेस्ट ट्यूब डाला, डायरेक्टली ना हीट करके, गर्म पानी से वो हीट हो रहा है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, अल्कोहल, और उस अल्कोहल को हम जब हीट करेंगे थ्रू दिस वाटर बाथ, फिर उसमें हम लीफ डालेंगे। फाइनली क्या होगा, इसको हम वाटर में वॉश करेंगे तो ये सारा ग्रीन कलर इसका डिज़ोल्व हो जाएगा, और उसके बाद हम इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, तब हमें पता चल जाएगा। आप ध्यान से देखो, इस आयोडीन सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है इस पिक्चर में भी, यानी कि रेडिश ब्राउन से वो ब्लूइश ब्लैक अगर हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ हैविंग ग्लूकोज इन इट। ठीक है, सो इफ यू सी we can read this, but we have to remove the green color of the leaves. This is called bleaching. Take a green leaf and dip it in boiling water in a beaker for about 10 minutes. Next, put the leaf in a test tube and pour spirit in it to completely cover the leaf. Make the test tube stand in a beaker containing water. Gently heat the beaker till all the color of the leaf comes out into the spirit. Take out the leaf, wash it in the water and put it on the plate. Pour some iodine solution on it. Does the leaf turn bluish black? This, yes, if it says yes, then this shows the presence of starch in the leaf. Now another function of leaf is transpiration. So इसका हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। Activity 8. Take a potted plant and keep it in a dark room for 24 hours. Since the leaves do not receive sunlight, they will not be able to prepare food. After 24 hours, there will be no food left in the leaf. Now cover the portion of the leaf with a strip of black paper. Put the plant in the sunlight for a few hours. Pluck the leaf and test it for the starch. In which portions of the leaf the starch is present? In which portion is it not present? If starch is present only in the portion that was not covered, what do you conclude? मतलब अगर आप किसी पॉटेड प्लांट को लेते हो और उसको 24 घंटे के लिए आप डार्क में रख देते हो, तो क्योंकि वो डार्क में है, सनलाइट उनको नहीं मिल रही है, तो लीव्स के अंदर कोई भी फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा है, और आफ्टर 24 आवर्स जो लीफ में पहले से फूड प्रिपेयर्ड था या रहा होगा वो भी यूज़ हो जाता है। तो देर इज़ नो फूड, नो ग्लूकोज, नो स्टार्च इनसाइड द लीफ। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, लीफ का कुछ पोर्शन हम ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं अच्छे से, ताकि उस पर लाइट ना हो, और फिर उसको वापस सनलाइट में रखते हैं कुछ घंटों के लिए। फिर उसी लीफ को हम टेस्ट करते हैं स्टार्च में, जैसे कि इस तरह से सेम प्रोसीजर करने के बाद हम स्टार्च टेस्ट करते हैं उस लीफ का। तो हम देखेंगे कि जहाँ पर हमने ब्लैक पेपर लगाया था वहाँ पर कोई भी फूड प्रिपेयर नहीं हुआ है, और जहाँ पर एक्सपोज टू सन था वहाँ फूड प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड और फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अ प्लांट और अ लीफ नीड्स सनलाइट। ठीक है, देन एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और फंक्शन होता है लीफ का, वो होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज़ नथिंग बट रिलीजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं वो अपने सरफेस से वाटर वेपर इवेपोरेट करती हैं, और ये क्यों करती हैं? ये इसलिए करती हैं क्योंकि वो इट हेल्प्स देम टू कूलिंग डाउन द लीव्स, एंड another important function is the water escapes from the leaves to pull more water to compensate for this loss. This water brings with it important nutrients required by the plant from the soil. So transpiration is also very important. This can also be studied by an experiment
और इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, और ट्रांसपिरेशन हमारे वाटर साइकिल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन से प्लांट वाटर वेपर नहीं निकलेगा देन द वाटर साइकिल में जो वाटर क्लाउड फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाता है. So it is very important for the water cycle also. So now we will study activity 9 in which we are taking a healthy potted plant और उसमें हम एक ब्रांच सेलेक्ट करते हैं और उसमें खूब सारी लीव्स अगर हैं तो उसको हम ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से टाई कर देते हैं और अच्छे से टाई करते हैं ताकि कोई भी एयर उसमें से निकल भी नहीं पाए और आ भी नहीं पाए. फिर क्या करते हैं, हम उसी वॉटेड प्लांट को थोड़ी देर सन में रखते हैं. After few hours, what will you observe? You will see small droplets on this polythene bag. इस पॉलीथीन बैग में हमको स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखेंगे वाटर के, और उस ड्रॉपलेट से हमको पता चलता है कि जो लीव्स हैं वो अपने सरफेस से वाटर वेपर निकाल रही हैं, और उनका पर्पस क्या है, वाटर को लीफ को कूल करना, और दूसरा पर्पस क्या है, टू पुल मोर वाटर टू कॉम्पनसेट फॉर दिस लॉस, और उस प्रोसेस में इनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. सो दिस इज़ द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, और मैं आपको आपके डाउट क्लास में भी ये समझाऊंगी. सो नेक्स्ट वी विल डू इन द next video, okay, the rest of the portion. So whatever questions I have given, just do those questions in your copy and start revising for your हाफ ईयरली एग्ज़ाम. जो भी पोर्शन आपको बोला गया है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए रिविज़न स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू चिल्ड्रन.